Good morning, children. Children, today we are going to start a new chapter. But before we start, I would like to tell you about the President of India. See, this is the list of presidents of India from 1950 to 2022. I hope you can see it. The first president was Dr. Rajendra Prasad. His tenure was from 1950 to 1962. Then Dr. Sarvapalli Radhakrishnan became the President of India from 1962 to 1967, and Dr. Zakir Hussain 1967 to 1969. Then Varagiri Venkat Giri from 1969 to 1974. Then again Varagiri Venkat Giri was from 1974 to 1977. Then Neelam Sanjeeva Reddy 1977 to 1982. Then Gyani Zail Singh from 1982 to 1987. Then Ramaswamy Venkat Raman from 1987 to 1992. Shankar Dayal Sharma from 1992 to 1997. Kochre Raman Narayanan from 1997 to 2002. Then Dr. APJ Abdul Kalam from 2002 to 2007. Pratibha Patil from 2007 to 2012. Then Pranav Mukherjee from 2012 to 2017. Then Sri Ramnath Kovind from 2017 till 2022, till last year. Okay? And the current president of India is Draupadi Murmu. Okay? So today we are going to study about our 11th president, Dr. APJ Abdul Kalam. Okay? Now turn to page number 88. Open page number 88, chapter 7, a role model, Dr. APJ Abdul Kalam. So the President of India is the head of the state and the first citizen of India. So whoever is the President of India, he or she is the head of the state. Actually, head of the country, not state. President of India is the head of the country. So here there is a mistake in your book. And President of India is the first citizen of India. Yes, the President of India is also called the first citizen of India. He or she is also the commander-in-chief of the armed forces. So there have been 13 presidents of India since independence. Now name the following presidents with the help of the box. So I have shown you the images of different presidents till date. So now it will be easier for you to identify the first one. Can you see the first picture? Yes. So in the first picture, which president? Who is the? Kindly name the president. So his name is APJ Abdul Kalam. Now look at the second picture. He is Mr. Ramnath Kovind. Now look at the third picture. He is Pranab Kumar Mukherjee. Okay. Now look at the last picture. He is Dr. Rajendra Prasad. Okay. So similarly, you can identify all the presidents. I hope. Now turn to next page. Page number 89. Read and enjoy. So we'll read a story where they are talking about Dr. APJ Abdul Kalam. So you will learn to know many things about. You will learn about APJ Abdul Kalam. So Dr. APJ Abdul Kalam was one of the greatest presidents of India.
He was very popular among students because he was very fond of students. Okay, so Dr. Abdul Kalam wrote many books which are very popular and liked by one and all. So the following story tells you how he rose to this eminent position, how he became the president of India. We'll come to know about this story, how he rose to the eminent, the important, the special position, the important position. So let's start with the story. Deepak picked up his bag and ran down the winding road on his way to school. So, first I will read it out, okay? First, I will read out the first page. Page number 89. Deepak picked up his bag and ran down the winding road on his way to school. He heard the school bell ring and said to himself, "There goes the school bell. It is welcoming me." As he ran in, the giggles and chatter of other children greeted him. Deepak entered the classroom and sat on a seat near the window, his favorite corner. He took out his book and the class teacher entered. "Good morning, ma'am," greeted the students. She smiled and looked around. "Good morning, dear children. Today we will read about a very famous person who was also the president of our country. Look at this picture and let me see how many of you can guess his name." All the students shouted, "APJ Abdul Kalam." "Yes," she said. Deepak, like others, opened his book and waited. He had started coming to school after a gap of 1 year. After his father's death in the city, it was not possible for his mother to send him to school. They shifted to their village and she started working in the fields to earn a living. Deepak wanted to become a police officer, but his dream was shattered. Life went on, and one morning he saw a big board at the village crossing. The villagers had gathered around the big board and were discussing in excited voices. They said that a big industrialist was setting up a school for the children of 10 surrounding villages. All the children would be provided education, books, and uniforms free of cost. It was truly a blessing for many. Within months, the school was functional and Deepak was very happy to resume his studies. His mother got a helper's job in the same school. So now children, pause the video and you also do reading of this page. I want everyone to read page number 89. So you have to pause the video and then read. And after reading this page, you can again play the video. Okay? Now, I hope you all have read page number 89. Now, children, there are few word meanings given on page number 89. Before I start the explanation of this page, I would like to explain the meanings of different words given, the new words which are given on page number 89. Winding. The first word is winding. So what do you mean? It's not winding, it's winding. Okay? So what do you mean by winding? With a lot of turns and twist. बहुत सारे टर्न्स और ट्विस्ट होते हैं जहाँ पर मोड़ होते हैं.
ठीक है, रोड पे बहुत सारे टर्न्स होते हैं, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द वाइंडिंग रोड, यानी बहुत सारे टर्न्स और ट्विस्ट थे रोड पे. सो वाइंडिंग मीन्स विद अ लॉट ऑफ टर्न्स एंड ट्विस्ट. गिगल्स, laughter in a silly high pitched way. silly यानी यहाँ पे अच्छे उससे नहीं बोल रहे, मतलब एक फनी वे में, सिली वे में बहुत तेज तेज हंसना, हा 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 करके, दैट इज गिगल्स. लाइक दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज chatter. chatter means talk informally about minor matters. छोटी छोटी बातों के बारे में आप बैठ के डिस्कस कर रहे हो, बात कर रहे हो, बट इनफॉर्मली. कोई फॉर्मल टॉक नहीं है, फॉर्मल डिस्कशन नहीं है. सो दैट इज चैटर. शैटर्ड. सो व्हाट डू यू मीन बाय शैटर्ड? शैटर्ड मीन्स डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड, जो खराब हो गया है. क्रॉसिंग, a place where two roads cross. Crossing is a place where two roads cross. उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? चौराहा, right? So where four ways, two roads are meeting at a point, and that point is known as crossing. That place is known as crossing. Okay? Industrialist, a person who owns any industry, who is a manufacturer, जो कुछ मैन्युफैक्चर करता है, जो कुछ बनाता है, नो दैट पर्सन, जिसकी इंडस्ट्री होती है, जो ओनर होता है इंडस्ट्री का, उसको इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं. ठीक है, इंडस्ट्री में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होती है. तो वो पर्सन जो मैन्युफैक्चर करता है कुछ, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट. उसको मैन्युफैक्चरर भी बोलते हैं. ओके, द लास्ट वर्ड functional. The last word is functional. Functional means operational, जो work करे. Functional is जब work करना. So functional है जो चीज़, working है जो चीज़, operational है. Right? So now let's start with the explanation of this page. It's very easy. The initial this thing, it's just a story of a boy, Deepak. Okay. So Deepak picked up his bag and ran down the winding road on his way to school. उसने अपना बैग लिया और जल्दी से दौड़ते हुए जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे रोड पे, अपना राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, टेढ़ी है, स्लोप है, जैसे भी है, वो दौड़ते हुए स्कूल गया. He heard the school bell ring and said to himself. उसको क्या सुनाई दिया? स्कूल बेल की आवाज़ सुनाई दी और उसने खुद से क्या बोला? There goes the school bell. It is welcoming me. कि स्कूल की बेल बज गई है और ये मुझे वेलकम कर रही है. As he ran in, the giggles and chatter of other children greeted him. जैसे ही दौड़ के वो क्लास में गया तो उसने क्या देखा? उस जो गिगल्स थे और चैटर थे दूसरे बच्चों के. गिगल्स मीन्स जो हंस रहे थे, बहुत सारे बच्चे बातें करके आपस में फ़नी तरीके से हंस रहे थे, ही हा हा. एंड चैटर बातें कर रहे थे, कुछ इनफॉर्मली बात करना ना. चैटर इज टॉकिंग इनफॉर्मली अबाउट माइनर मैटर्स, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से बातें करना. तो आप फ्रेंड्स करते हो ना स्कूल में, मॉर्निंग में आके हंसी मजाक, एक दूसरे से बातें, एक दूसरे से कुछ डिस्कस करना है, तो वो भी करते हो. ऐसे ही दीपक ने जब क्लास एंटर किया तो उसने देखा बाकी के बच्चे गिगल्स और चैटर्स कर रहे थे और उसने ऐसा अज्यूम किया कि दूसरे बच्चों के गिगल्स और चैटर्स उसको ग्रीट कर रहे हैं. ओके, यानी वेलकम कर रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं उसको. दीपक एंटर्ड द क्लासरूम एंड सैट ऑन अ सीट नियर द विंडो. दीपक क्लासरूम में एंटर किया और विंडो के पास में जो सीट थी उस पर बैठ गया. ओके, ही टुक आउट हिज बुक एंड द क्लास टीचर एंटर्ड. Okay, the seat near the window is his favorite corner. उसको विंडो के पास में बैठना अच्छा लगता है, right? So he took out his book. उसने अपनी बुक निकाली और क्लास टीचर आ गई. क्लास टीचर, जब क्लास में टीचर आती है तो मैम क्या बोलती है? गुड मॉर्निंग. बच्चे क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग मैम, है ना. तो इसी तरह उस क्लास में भी क्या हुआ? बच्चों ने ग्रीट किया,
सारे बच्चों ने ग्रीट किया टीचर को. गुड मॉर्निंग मैम. ग्रीटेड द स्टूडेंट्स. शी स्माइल्ड. टीचर स्माइल करती है. टीचर ने स्माइल किया और सबको देखा और बोला गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन. टुडे वी विल रीड अबाउट अ वेरी फेमस पर्सन. टीचर ने आके बताया कि आज हम एक फेमस पर्सन के बारे में पढ़ेंगे. ओके जो प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री भी थे. अब उन्होंने एक पिक्चर दिखाई मैम ने. ओके और पूछा कि कितने लोग गैस कर सकते हैं. तो बहुत सारे बच्चों को पता था. सारे बच्चों ने चिल्ला के बोला APJ अब्दुल कलाम. यस शी सेड. टीचर ने बोला यस ही इज APJ अब्दुल कलाम. दीपक लाइक अदर्स ओपनड हिज बुक. दीपक ने भी और बच्चों की तरह अपनी बुक ओपन करी और वेट किया. He had started coming to school after a gap of 1 year. अब now स्टोरी APJ अब्दुल कलाम से हट के दीपक पे गई. Now they are telling कि दीपक जो है, राइटर इज टेलिंग यू कि जो दीपक है वो 1 साल के गैप के बाद स्कूल आया. क्यों? क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी सिटी में और उसकी मदर उसको स्कूल नहीं भेज पा रही थी क्योंकि उनको फाइनेंशियल इश्यूज थे. वो विलेज शिफ्ट हो गए और वहाँ पे वो फील्ड में काम करने लगी. फील्ड में काम करके एक लिविंग अर्न करने के लिए फील्ड में काम करती थी ना. लिविंग यानी जिंदा रहने के लिए. बिकॉज उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे तो वो काम करती थी और खाते थे. तो उन लोगों को बहुत मुश्किल होती थी. राइट. तो विलेज में रहने लगे. सिटी में सरवाइव नहीं कर पाती वो. तो वो विलेज में चली गई क्योंकि उनको विलेज में फील्ड में उन्होंने काम किया और लिविंग अर्न करे. दीपक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था बट उसके सारे ड्रीम्स क्या हुए? शैटर्ड हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, सब खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में उसके फादर नहीं रहे और मदर अकेले नहीं कर पा रही थी मैनेज. तो मदर विलेज चली गई. अभी दीपक की पढ़ाई छूट गई. दीपक स्कूल ही नहीं जा पाता था, है ना. तो फिर वो पुलिस ऑफिसर कैसे बनता? वो पढ़ ही नहीं पाता था. उसको बहुत शौक था पर सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो नहीं पढ़ पाया. Life went on and one morning he saw a big board at the village crossing. इसी तरह लाइफ चलती जा रही थी और एक दिन मॉर्निंग में क्या हुआ? दीपक ने एक बड़ा सा बोर्ड देखा. विलेज की क्रॉसिंग पे एक बड़ा सा बोर्ड देखा. राइट. और उस बोर्ड पे क्या था? एक स्कूल का बैनर था. Okay? The villagers had gathered around the big board and were discussing in excited voice. अब villagers उस big board के आसपास gather हो गए और discuss कर रहे थे excited voices में. उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट एक स्कूल सेटअप कर रहा है आसपास के जो 10 विलेजेस हैं उनके लिए, वहाँ के बच्चों के लिए. तो अब सारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी. सब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे वो और बुक्स और यूनिफॉर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे. इट वॉज ट्रूली अ ब्लेसिंग फॉर मैनी. ये जो है स्कूल ओपन हो रहा है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सबके लिए. विद इन मंथ्स द स्कूल वॉज फंक्शनल. कुछ ही महीनों में क्या हुआ? स्कूल काम करने लगा, यानी वर्किंग कंडीशन में आ गया, स्टार्ट हो गया, फंक्शनल हो गया, ऑपरेशनल हो गया. और दीपक बहुत खुश था. क्यों? क्योंकि अब वो स्कूल जा पा रहा था. अब 1 साल के बाद उसने वापस से अपनी स्टडीज रिज्यूम करी, रीस्टार्ट करी. हिज मदर गॉट अ हेल्पर्स जॉब इन द सेम स्कूल. आपके स्कूल में भी हेल्पर्स होते हैं ना. आपके हेल्पर्स कौन है? जो आंटी हैं, जो अंकल हैं, आपके लिए वर्क करते हैं, आपके लिए क्लासरूम साफ रखते हैं, स्कूल को साफ रखते हैं, वाटर आपको जहाँ पे वाटर टैंक है, वॉशरूम्स हैं, वो सब क्लीन करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं ना, वो आपके हेल्पर्स हैं. ऐसी दीपक की मदर को हेल्पर की जॉब मिल गई उसी स्कूल में. ओके. नाउ टर्न टू पेज नंबर 90. Now we will do the first paragraph of page number 90 today. Okay. Deepak, can you read the lesson for us? Said the teacher. He confidently replied, Yes, ma'am. He read aloud. Awul pake
Jainuddin Abdul Kalam, popularly known as Dr. APJ Abdul Kalam, was an Indian scientist who was also the 11th President of India. He was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu in South India. His father, Jainuddin, was a boat owner and his mother, Ashima, was a housewife. He came from a poor family and started to work at a very early age to earn money for his family members. Kalam loved his family. He scored average marks in school but was very hardworking and intelligent. He spent hours studying, especially mathematics. After school, Kalam distributed newspapers to earn money. So, Deepak, can you read the lesson for us? टीचर ने बोला दीपक क्या तुम लेसन रीड कर सकते हो हमारे लिए? तो दीपक ने बोला यस, कॉन्फिडेंटली बोला. कॉन्फिडेंटली मीन्स इन अ मैनर शोइंग सर्टेनिटी, कि एकदम कॉन्फिडेंस से बोलना, सर्टेनिटी दिखाते हुए कि हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ. यस मैम. ही रेड अलाउड, उसने बहुत तेज़ आवाज़ में पढ़ा. फिर ये जो मैंने रीड किया है पैराग्राफ, अब आपको भी इसकी रीडिंग करनी है. ओके, यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ. सो अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस पैराग्राफ, then I will explain you this paragraph. Okay, so again pause the video and read the first paragraph of page number 90. Okay, now I hope you have read the first paragraph of page number 90. So Deepak started reading. Deepak read about APJ Abdul Kalam. The chapter was about Dr. APJ Abdul Kalam. So what was full name of Dr. APJ Abdul Kalam? What is his full name? Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam. But we popularly call him as Dr. APJ Abdul Kalam. APJ बोलते हैं शॉर्ट में, APJ. ओके, बट उनका फुल नेम क्या है? अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम. वो इंडियन साइंटिस्ट भी थे और हमारे 11th प्रेसिडेंट भी थे. और उनका बर्थडे कब होता है, वो कब पैदा हुए थे? ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931. ठीक है, 15 अक्टूबर 1931 को वो बॉर्न हुए थे. ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए थे कहाँ पर? रामेश्वरम, तमिलनाडु में. एंड तमिलनाडु कहाँ है? साउथ इंडिया में. और उनके फादर का क्या नाम था? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फादर का नाम था जैनुलब्दीन. सो उनके फादर जो थे जैनुलब्दीन, वो बोट ओनर थे. उनके पास एक बोट थी. ओके, वो बोट चलाते थे. और उनकी जो मदर है आशिमा, वो क्या थी? वो हाउसवाइफ थी. और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत ही पुअर फैमिली के थे और उन्होंने बहुत ही अर्ली एज में काम करना शुरू कर दिया था अपनी फैमिली मेंबर्स को हेल्प करने के लिए. ओके, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए पैसे कमाने के लिए, अर्न मनी, उनको हेल्प करने के लिए, उनके लिए पैसे कमाने के लिए बहुत अर्ली एज में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने वर्क करना शुरू कर दिया था. बिकॉज ही लव्ड हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते थे. ही स्कोर्ड एवरेज मार्क्स इन स्कूल. उनके स्कूल में ना एवरेज मार्क्स आते थे. एवरेज मार्क्स मतलब जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है और ख़राब भी नहीं है, ठीक ठीक होती है, एवरेज होती है, मॉडरेट परफॉर्मेंस होती है, ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस. ओके, पर वो बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत इंटेलिजेंट थे. उनको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था? आपको भी सारे सब्जेक्ट्स में तो इंटरेस्ट नहीं होता ना, हर किसी के इंटरेस्ट अलग होते हैं. किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद होता है, किसी को कोई. तो उनको मैथ्स बहुत पसंद था, स्पेशली मैथमेटिक्स. वो घंटों पढ़ते थे, बहुत आवर्स लगाते थे सिर्फ किसको पढ़ने के लिए? मैथ्स पढ़ने के लिए. ही डेडिकेटेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम फॉर मैथमेटिक्स. ओके,
आफ्टर स्कूल वो क्या करते थे? न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों में. आपके मॉर्निंग में आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर वाला आता है न्यूज़पेपर देने. तो वो काम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आफ्टर स्कूल करते थे पैसे कमाने के लिए, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर का वर्क. ओके, ही स्टडीड. ओके, टुडे वील डू ओनली दिस मच. ओके, rest of the chapter I'll explain you tomorrow. Kindly read again. Read again. I want each and every child to do reading of page number 89 and 90. Okay? Read again. Underline the hard words. If you have any doubt, you can ask me during the class. Okay? Thank you, children. Have a nice day.